Hello students, welcome to the basics of IPM verbal ability section and my name is Brenda. Well, आज के इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस सेशन में हम कुछ बहुत important and बहुत interesting चेक करने वाले हैं which is understanding the basics of vocabulary through various techniques. Now let's understand why this topic is important and how much is this topic important. Well, to answer the first question, why is this topic important? Well, it is important because अगर आपका vocabulary strong है तो आप as an IPM aspirant ना केवल डायरेक्ट क्वेश्चन जो IPMAT के पेपर में आने वाले हैं या सिमिलर रिलेटेड टेस्ट में आने वाले हैं वो आप सही कर पाएंगे बट आपका कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग हो जाएगा सो दैट मीन्स just by improving this section you will be able to let's say kill two birds with a stone. That means दो सेक्शंस को आप बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाओगे दैट मीन्स अ बूस्टेड स्कोर राइट एंड ये कितना इंपॉर्टेंट है वेल all those IPM aspirants out there, it's a super crucial topic for you. बहुत important है for the stated reasons. So now इसे कैसे improve कर सकते हैं? See, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप अपना वोकेबलरी को एनहांस करना चाहते हो बिल्ड करना चाहते हो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी तो रीडिंग ही है सो खूब रीडिंग करो मन लगा के रीडिंग करो एंड जो डिफिकल्ट वर्ड्स या न्यू वर्ड्स आपको मिले चैलेंजिंग वर्ड्स मिले मेंटेन अ नोटबुक मेक आई मीन राइट देम डाउन एंड कीप रिवाइजिंग देम राइट सो ये तो हुआ एक तरीका अपना वर्ड बैंक स्ट्रॉन्ग करने का एंड दूसरा तरीका the one that I'll suggest now and the one that I'll discuss with you now is through certain techniques. So some of them, I mean, one of them is a mnemonic technique, and then there is this root method and the word cluster method. ये techniques आपको लर्निंग के प्रोसेस को थोड़ा सा बूस्ट कर देंगे थोड़ा सा स्मार्ट कर देंगे एंड इंटरेस्टिंग तो बनाएंगे ही नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट दीज टेक्निक्स आर एंड हाउ दे वर्क इन दिस सेशन एंड किस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है आईपीमैट के वर्बल एबिलिटी सेक्शन में वो भी हम देखेंगे आज इस सेशन में सो लेट्स जस्ट डेल्व deep and understand all about vocabulary through various techniques. So we'll start with the mnemonic technique. Now, first of all, let's understand ये mnemonic technique है क्या और ये काम कैसे करता है. Well, mnemonic technique is essentially a memory device. Anything that helps you understand, retain, and remember a word for a long period of time. That's what a mnemonic technique is. So let's say you come across a new word when you were reading an article. You come across a new word. Now you want to see what can you do you'll google you'll probably open the dictionary and you'll write the meaning of the word and probably you'll try to say memorize it and then try to retain it by practicing it ये तो हुआ एक तरीका लेकिन अगर हम निमोनिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो जानते हैं हम क्या करते हैं हम वर्ड को लर्न करना या याद रखना आसान बना देते हैं कैसे हम उस वर्ड को किसी भी ऐसी चीज से एसोसिएट करते हैं जिसकी वजह से वो वर्ड हमें याद हो जाए नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस वर्ड द वर्ड इज इम्यूटेबल नाउ कभी सुना ये वर्ड पहले डू यू नो व्हाट दिस वर्ड मींस वेल इम्यूटेबल में अगर आप थोड़ा सा वर्ड को ब्रेक कर दो तो म्यूट होता है चुप द वन हु डजंट स्पीक राइट अपने रिमोट से आप म्यूट करते हो ना टीवी को सो वो चुप हो जाता है बोलना आवाज आने बंद हो जाती है सो म्यूट सिंपली मीन्स दैट आपने उसको चुप कर दिया एंड see break it immutable so bull as in ऐसा लग रहा है कोई बुल की बात कर रहा है so immutable the mnemonic here could be एक बुल जो चुप है जो बोल नहीं रहा है because he has decided not to change his mind so immutable का मतलब होता है somebody who's unchangeable unalterable steadfast inflexible बिल्कुल inflexible no you can't make him change his mind वो है immutable it's essentially an adjective अब इसको अगर हम एक सेंटेंस में यूज करना चाहें so well isn't the past immutable can we change the past ever Samarth, I will address your question at the end of the session, right? Now, see, the past is immutable. You cannot change the past. It's unalterable, unchangeable, or maybe like a sentence here, physics is an exacting science, is a demanding science bound by immutable laws. So, ऐसे laws in physics में जिसे आप change नहीं कर सकते हो. So, that's what immutable is, and the mnemonic a mute bull. Okay, he's a bull. You cannot change, you can make him change his mind. Immutable. Well, that's one mnemonic technique.
Now let's take a look at another word. Now see, the other word that I have for you is an adjective, which is hapless. Now hapless कौन है? Hapless क्या है? Hapless है कुछ unfortunate है, कुछ miserable है. So there was this hapless person stranded in the desert. भाई फंस गया था कोई, उसको कुछ हो नहीं पा रहा था, वो फंसा हुआ था वहाँ पे. He was hapless, he was unfortunate, he was miserable, or maybe the hapless passengers were rescued by the army men. So they were miserable, they were unfortunate, but they were luckily rescued by someone. So hapless simply means unfortunate or miserable. अब इसको निमोनिक के ढंग से अगर याद करना चाहें तो लुक एट दिस बॉय, कितना सैड है, उसकी आंखों में कितना दर्द है बेचारा, होमवर्क नहीं करा होगा, डांट पड़ गई होगी. सो ही इज हैप्लेस हियर, इज अनफॉर्चुनेट हियर. सो हैप्लेस कौन है? जिसकी हैप्पीनेस कम हो गई है या हटा दी है. हैप्पी लेस. So happy less, hapless. And what does that mean? Dukhi, udas, parishan, unfortunate, unlucky. All right. The hapless student who could not do well in the exam, or the hapless student who was spanked by someone. So that's what hapless. Now ये जो हमने देखा कि हमने एक पिक्चर देखा या हमने उस वर्ड को हैपलेस को हैप्पी लेस बना दिया या इम्यूटेबल को म्यूट बुल बना दिया, ये निमोनिक टेक्निक है जिससे आपको जब आप इम्यूटेबल सोचोगे आप सोचोगे ओके म्यूट बुल, अ बुल दैट डजंट वांट टू चेंज इट्स माइंड, या हैपलेस हैप्पी लेस, अ बॉय हु वाज सैड बिकॉज ही वाज प्रोबेबली नॉट हैप्पी. सो ये है निमोनिक टेक्निक. एक नया वर्ड लेंगे, उसके अराउंड कुछ भी आप सोचेंगे, वो कोई पिक्चर हो सकती है, वो एक फनी स्पेलिंग हो सकती है, वो आपकी पड़ोस की कोई शर्मा जी अंकल हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उस वर्ड का मीनिंग हमेशा याद आ जाएगा. So anything that helps you remember the meaning of the given word is a mnemonic technique. There is no hard and fast rule कि ये mnemonic है. You can create your own mnemonic और जितना मजेदार बनाओगे उतना जल्दी तुम्हें वो word याद होगा और भूलेगा नहीं. So you can always try that. Now let's take a look at another method to improve your vocabulary. Now this one is called root method. The root method का concept थोड़ा simple है and ये काफी effective method है अपने word bank को strong करने के लिए, बिकॉज इसमें आप एक वर्ड से लिटरली एक वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स लर्न कर सकते हो और बहुत इंटेलिजेंट गेस भी कर सकते हो कि किसी नए वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है, प्रोवाइडेड इट इज एसोसिएटेड विद द गिवन रूट इन क्वेश्चन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ये रूट मेथड है क्या और ये काम कैसे करता है. नाउ सी, essentially some words in our language come from a root. Say lex is a root word. Let's say for example lex is a root word and iska matlab hai let's say of words. Now lex means words. Now इस लेक्स वर्ड के आगे या पीछे कुछ हमने और लेटर्स अफिक्स कर दिए, जैसे लेक्सिकॉन या लेक्सिकल या लेक्सिकोग्राफर या लेक्सिकोलॉजी, एनीथिंग. अब देखो हर वर्ड का जो नया वर्ड, जो नया डेरिवेटिव, हमारे पास वर्ड बन के आया उसका तो अपना मीनिंग है. लेक्सिकॉन का जो भी मीनिंग है या लेक्सिकोग्राफर का अपना एक मीनिंग है. लेकिन अगर लेक्स मीन्स वर्ड्स तो लेक्सिकॉन, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोलॉजी, ये वर्ड वर्ड से दूर नहीं जाएंगे. सो दे विल स्टे कनेक्टेड to the root one way or the other, the meaning of the root one way or the other. So whenever you see a word with that same very root in it, you will be able to kind of make an intelligent guess as to what that word could possibly mean. Now let's see. Lexicon, well, it's a noun which means, say, आप इसे ऐसे बोल सकते हो, it's a mental dictionary that you have. आपको जितने words आते हैं, so the knowledge of the words of a given language is the lexicon of that person. So it's your mental dictionary, or maybe the list of words from A to Z on a particular subject or in a language. Now, that was lexicon. Now, if I were to use it in a sentence, it's difficult to understand the lexicon of the teenagers. It's constantly changing. Okay. So then there is lexical. Lexical hota hai relating to words or vocabulary of a language. So we use a lot of lexical methods to teach the students. Lexicographer is a person whose job is to write words in a dictionary. Then lexicology. Now, logy अपने आप में एक root word है जिसका मतलब होता है study. तो lex word, logy study, put them together, क्या बन के आया? Lexicology is the study of form or meaning or behavior of words. Then there is alexia. Well, it's essentially a disease, थोड़ा सा दिमाग की वायरिंग में प्रॉब्लम, मगर यहाँ पे क्या होता है, आप वर्ड्स को रीड नहीं कर पाते. और so that's alexia.
सो लुक एट द वर्ड्स, हर वर्ड में लेक्स वर्ड आया था और उसका मीनिंग वर्ड वर्ड के कितना क्लोज था, राइट? सो अब याद करो, डिसलेक्सिया एक मूवी में देखा था, बड़ी फेमस और पॉपुलर मूवी थी। उसमें डिसलेक्सिया जिस बच्चे को होता है उसे क्या परेशानी होती है, उसे वर्ड्स नहीं समझ में आते होते। सो लेक्स means words, and if you get to see the word lex in a given word, it would most probably mean something related to word. Now let's take a look at the next root word. दिस वन इज एब, विच मीन्स अवे। अब कितने सारे वर्ड्स में हम एब वर्ड यूज करते हैं विदाउट इवन नोइंग कि उसका मीनिंग अवे से कितना पास है। सो पहला वर्ड काफी बेसिक है, हमें ऑलरेडी पता होगा, एबनॉर्मल। Abnormal means away from normal. Now, away from normal, what does that mean? It means somebody who is not behaving in a normal fashion or according to the norms of the society. So if somebody is abnormal, he's not behaving normally. So he's away from normal. Now abduct, lead away. भाई किसी को आप बिना परमिशन के, बिना सही रीजंस के कहीं पे ले जाएंगे, so you'll take lead someone away, that is take someone away illegally, you are abducting, जैसे kidnapping होता है, so that's abduction. Now abdicate and abnegate, दोनों में आप देखो रूट वर्ड ab यूज हुआ है, abdicate, abnegate, दोनों केसेस में we give up, we step away from something. So maybe you step away from pleasures of life, maybe you step away from the position that you have been given. So, one way or the other, you renounce, you step away, you step down from whatever responsibilities or obligations you had. So, abdicate, abnegate. Then there is abrasive. Abrasive होता है scraping away. अब सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो abrasive का होता है वो sand paper जिससे हम मटके को pot को घिसते हैं before we start painting that pot. But that's the literal meaning of abrasive. The figurative meaning of abrasive could be rude. So abrasive people are rude people. Now, why does abrasive mean rude? Because you do not care for the feeling of others. So you are rough like a sandpaper. You are rude and you really do not bother about the feelings of others. So it's an adjective. And if somebody is abrasive, he doesn't really care. And the last word in the list is abject. Now, abject is away from hope, that is without any hope. So the boy sat, or maybe the abject boy sat and pondered what to do next. So if the boy was abject, he was, say, without hope, he was hopeless, and he was sitting and thinking what to do next. So a hopeless boy would probably not know what to do next, right? Now we'll take a look at another method. This one is a word cluster method. Now again, just like root method, ये भी एक बहुत पावरफुल सोर्स है, एक टूल है अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव करने का। इसमें हम क्या करते हैं, अगेन देखो नाम क्या है उसका, वर्ड का क्लस्टर। क्लस्टर कैसे बनाएंगे हम? क्लस्टर हम किसी भी ग्राउंड्स पे बना सकते हैं। आपने एक वर्ड लिया, लेट्स से यू वर रीडिंग अ टेक्स्ट, यू केम अक्रॉस अ न्यू वर्ड, यू रियली लाइक द वर्ड, or maybe you found the word really challenging and you thought, okay, I want to understand this word, what do I do now? So you wrote down the word somewhere, let's say you googled, or maybe you found the meaning of the word in the dictionary, and instead of just writing the word and the meaning and probably what part of speech it is, you went that extra mile and you wrote down the synonyms of the word. So आपने एक क्लस्टर क्रिएट कर लिया। अब इसे सोच के देखो, उस वर्ड का मतलब तो आपको पढ़ना ही था, वो तो करना ही था। अब यहाँ पर अगर आपने उसके 5 सिनोनिम या 6 सिनोनिम या 4 सिनोनिम भी लिख लिए साथ में, तो आपको वो वर्ड नहीं, उसके सिनोनिम्स भी साथ साथ ऑफ कोर्स आप पढ़ोगे, उन्हें समझोगे, लर्न करोगे, याद रखने की कोशिश करोगे, लेकिन एक स्मार्ट मेथड से आपका एक वर्ड के साथ 6 वर्ड्स फ्री मिल गए आपको, एंड आपका वर्ड बैंक कितना एनहांस हो गया। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ हैप्पी यू वुड बी, लेट्स से यू created a word bank based on certain criteria, and say tomorrow you're reading something, you come across one of the words from this word bank, trust me, you will understand, you will feel very happy, you will feel accomplished when you'll see those words, and you will probably know the meaning of the word. Just think about it, see that in your head, you will have a good feeling, you'll like it. Now a cluster create किया है, this is based on how people talk. So how do they talk? Well, some people talk a lot, some people do not talk at all, some people are loud, some people are quiet. So based on the way people talk to one another, created a word cluster for you. Now not necessarily synonyms of one another, but then yeah, it is how people talk. So the first word here is careless. Careless वो लोग होते हैं जिन्हें बोलना बड़ा पसंद होता है,
एंड क्यों ना हो, अच्छी चीज है, बोलो, खुश रहो, बातें करो एंड अपने दिल को ठंडा रखो. सो garrulous people talk a lot. They just love to talk. And if you're not one of them, be one of them. It would be good. Then there is loquacious. Now, loquacious for some reason is same as garrulous. Loquacious is a root word actually. There is this word loq, which means talk, and loquacious simply means talkative, just like garrulous. So here these two words are synonyms of one another. So garrulous and loquacious, or maybe verbose, that's another word that we could use here. So say, let's just add another word, verbose. Well, they all mean talking a lot, using a lot of words. Then there is this word cogent. Now, cogent can be remembered because cogent means convincing. Now, if at all you can say something and can convince the other through your words, you are a cogent person, or whatever you said was cogent. So, cogent speech will always convince the others. So, cogent, convincing talk. Then there is tacitone and reticent. Now, these both mean you choose not to talk. So, a lot of us are not very happy being very expressive. We kind of love to keep our thoughts to ourselves, and there's nothing wrong with that. Well, if it suits your temperament. Now, taciturn people are quiet people. They do not talk a lot, and same is reticent. So these are synonymous with one another. And then there is laconic. It's a beautiful word which means you speaking less, but whatever you're saying is power packed. तो भाई रेटिसेंट और टैसिटर्न तो बोलते नहीं है. तो आप एक पार्टी में गए, there is this friend of yours who doesn't wish to open up, so you could say he's a little tacit, he's taciturn. But laconic, कम बोलेंगे लेकिन सामने वाले की बोलती बंद कर देंगे. So laconic speech, power packed speech. बोला कैसे? Power packed बोला. That's laconic. And then there is vociferous. Now उसके नाम में ही देखो क्या है. Voci, voice, ferous, थोड़ा सा fury है. So when you are loud about what you're saying, you are vociferous. Now, let's take a look at some questions based on the type of questions that are expected in the IPMAT verbal ability section. Now, I hope वो तीनों methods आपको समझ में आए. See, students, vocabulary बिना improve करे आप IPMAT का पेपर देने जाएंगे तो you will be taking chance. आपका एक पूरा साल stake पे है. So, अगर आप IPMAT का पेपर लिखना चाहते हो, so make sure that you really work hard on your vocabulary. That's point number one. Now, reading and incorporating the words, writing the words down, वो बहुत important है. Words को हमेशा लिख लेना चाहिए. एक notebook बनाओ, dedicated notebook बनाओ जिसमें लिखो and टाइम एंड अगेन उसको रिविजिट करो एंड उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ोगे तो हेल्प करेगा. देन दीज थ्री मेथड्स सबसे इफेक्टिव है रूट मेथड एंड वर्ड क्लस्टर मेथड बिकॉज आप एक वर्ड से ज्यादा वर्ड्स पढ़ सकते हो, ज्यादा वर्ड्स को याद करने की कोशिश कर सकते हो. सो इट्स स्मार्ट वर्क. एंड निमोनिक टेक्निक, चलो भाई वर्ड क्लस्टर मेथड से थक गए, चलो अब एक निमोनिक बनाते हैं. सो काम भी और थोड़ा सा मजा भी. सो आप हंसते खेलते प्रिपेयर कर सकते हो. Now to answer the question that Samarth Sharma has asked me, see, what is the level of difficulty of verbal ability in IPMAT Indore? Now Samarth, it's a fantastic question and I think आपकी वजह से बहुत सारे लोगों का फायदा होने वाला है because IPMAT का verbal ability section doable होता है. उसके सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि आपको लगेगा अरे ये क्या है. वर्केबल है, डूएबल पेपर होता है. लेकिन हैविंग सेड दैट आई वुड ऑल्सो वांट टू क्वेश्चन यू और वॉर्न यू कि आप इस पेपर को लाइटली नहीं ले सकते. डूएबल पेपर वो उन बच्चों के लिए है जिनको कॉन्सेप्ट की नॉलेज है. अगर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि कोई चीज़ काम कैसे करती है, वोकैबुलरी काम कैसे करती है, ये ग्रामर के रूल्स काम कैसे करते हैं, तो you will be very happy when you will see your score of the ability section. लेकिन अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं रखेंगे और ये पेपर देने चले जाएंगे तो trust me, you will be in for a surprise. Trust me, the paper is doable, but it needs certain amount of understanding of certain things. Now आप IIM जाना चाहते हैं and आप इसे हल्का नहीं ले सकते. You have to prepare. लेवल मॉडरेट है, कट ऑफ थोड़े हाई चले जाते हैं. सो प्रिपरेशन हमें रोबस्ट रखना बहुत जरूरी है. एंड ट्रस्ट मी, वोकैबुलरी इज द फाउंडेशन. आपका वोकैबुलरी अगर स्ट्रॉन्ग है
तो आप इस पेपर में बहुत अच्छा करोगे, बिकॉज ट्रस्ट मी, से 14-15 क्वेश्चंस तो वोकेबलरी बेस्ड आते हैं, प्लस आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होता है. सो दिस सेक्शन अलोन guarantees good say 12 questions reading comprehension passage based on vocabulary, of course, and 10-12 direct questions based on vocabulary. So what are we talking about? We are talking about good say 30 into 4 120 marks. कट ऑफ निकल जाएगा आपका इसी में. So good book for verbal ability. Well, Ronak, there can be several books that you can. How to improve your concepts? Okay, kids, सबसे पहले if you want to improve your verbal ability section, embrace English. English में reading, I mean good literature को पढ़ना शुरू कर दो. And अच्छी books अगर आपको चाहिए, see editorials पढ़ो, अच्छा literature पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पढ़ो. आई मीन राइटर क्यों कुछ कह रहा है, कैसे, क्या कहना चाह रहा है आपसे, क्या लिखा है उसने. सो यू शुड हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स. Why would you want to purchase a book meant for CAT level students? आप पहले अपनी बेसिक्स पे काम करो. सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड आपका लेवल कहाँ है. कैट इज गुड, कर लो, लेकिन पहले बेसिक्स पता होने चाहिए. मुझे मालूम तो हो मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ. राइट. सो वर्क ऑन द बेसिक्स. आईपीमैट के पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं. दे डोंट आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, दे आस्क यू क्वेश्चंस वेयर यू नीड टू यूज योर कॉन्सेप्ट्स. अब इन्हीं क्वेश्चंस में समझ लेते हैं. बेटा, डरने से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ. अपनी डर को अपनी स्ट्रेंथ अगर हम बना ले और पेपर के पैटर्न को सॉल्व समझे, उसके लेवल को समझे और उस हिसाब से प्रिपेयर करें. हमारे वीडियोस देखते रहे, कैसे नहीं प्रिपेयर होगा आपका. राइट. नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दीज क्वेश्चंस. नाउ सी, जनरली आईपी मैथ में सिंगल ब्लैंक के फिलर्स या डबल फिलर्स, ट्रिपल फिलर्स एंड इवन 4 फिलर्स तक के क्वेश्चंस आए हैं. नाउ इट मींस कि हम सिर्फ एक स्ट्रैटेजी समझें कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम डील कैसे कर सकते हैं. ओके. So let's see. The first one says, okay, reading the question is important, otherwise you'll miss an important information. This one says the dash workers find shelter in abandoned toilets and dry culverts. Culverts वो pipe होते हैं जो रोड के नीचे होते हैं, so that the water can pass through. So dash workers find shelter in abandoned toilets and culverts. Culvert में और abandoned toilets में कौन रहेगा? बहुत हैप्पी पर्सन रहेगा, या देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द पर्सन. कोई ऐसा इंसान जिसको अबैंडन टॉयलेट में या कलवर्ट में जाके रहना पड़ रहा है. जस्ट थिंक अबाउट इट. डू वी नीड अ पॉजिटिव वर्ड और अ नेगेटिव वर्ड हियर? एंड वी नीड एन एडजेक्टिव हियर. ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. नाउ सी, composed means calm, likely means probable, devoid, something is missing, and hapless, well, we read the word hapless. Hapless was happyless, that means unfortunate, miserable. Ab batao, what do you think is the answer? I guess very easily it is hapless. The hapless workers find shelter in abandoned toilets and dry culverts. South sees dash in the number of fatalities. Now see, ardent, enthusiastic. Garrulous, we've read the word. Talkative. Hieratic means concerning the priests. And spurt, if there is an increase in something, sudden increase in something, that's a spurt in something. So South sees, I guess, spurt in the number of fatalities. Now see, if you want to do well in this test, you need to understand the connotation of the word, the meaning of the word, and what part of speech that word is to get the answers right. The next one, the conflict caused a dash in relations between former allies. Now, ally is somebody who supports you. अगर conflict हुआ, caused a. Now, see, I think we need a noun here. A के बाद noun या adjective ही आ सकता है. So, we have to understand that. In relations between former, भाई पुराने supporters थे, conflict हुआ, and कुछ हो गया. क्या हुआ हो सकता है? Discourse, discussion, consolidation, so kind of uniting things, rupture, break. And lexicon, we have read the word. Lexicon is the word bank that you have, right? So what do you think is the right word to go here? Discourse, consolidation, rupture, or lexicon? Well, the answer would be rupture. Then a circular was then issued with guidelines to various stakeholders on dash of scheduled domestic operations, which included the measures to be taken by them to protect the health of persons involved in air travel. So a guideline, a circular is issued with guidelines to various stakeholders on dash of the schedule. Now see, we need a noun here. Recommencement, investment, discovery, affect. Affect is a verb, will be,
should be eliminated out, right? It's a verb. We need a noun here. Um, Discovery of a schedule, investment, पैसा लगाया हमने बैंक में नहीं. Recommencement, when you restart something, when you reinstate something. I guess this one was easy. The answer would be recommencement. Now, let's take a look at another set of questions जहां पर हमारे पास दो blanks missing है. ये क्वेश्चन शायद सिंगल ब्लैंक से ज्यादा आसान होते हैं बिकॉज यू नो व्हाट, यहाँ पे क्या ट्रिक हमारी क्या हेल्प करेगी. आपके पास दो ब्लैंक्स हैं और चार ऑप्शंस हैं. अगर कोई भी एक वर्ड फॉर श्योर एक ब्लैंक में नहीं आएगा तो वो पूरा ऑप्शन हमारे लिए यूजफुल नहीं है बिकॉज आधा सही आधा गलत. वेल, दिस इज नॉट मैथ. यहाँ पे या तो सही होगा या गलत होगा. सो इफ एन ऑप्शन, a part of the option is wrong, that the entire option cannot work as a plausible answer. So हम जब चेक करना शुरू करते हैं, देखो ध्यान से देखो, फर्स्ट वर्ड फिट्स इन द फर्स्ट ब्लैंक, सेकंड वर्ड डजंट फिट इन द फर्स्ट ब्लैंक, और एलिमिनेट, नॉट यूजफुल. सो ये चीज ध्यान रखेंगे एंड ब्लैंक्स को फिल करेंगे. सो राइजिंग एड क्लटर ऑन टेलीविजन एंड ग्रोइंग कंज्यूमर dash towards advertising are forcing some big advertisers to think out of the box for delivering their brand messages in a more dash and compelling format. Now, last में मुझे parallelism दिखाई दे रहा है. पहले तो मीनिंग भी समझ लेते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन का. सो एड क्लटर बढ़ रहा है टीवी पर एंड ग्रोइंग कंज्यूमर डैश टूवर्ड्स एडवर्टाइजिंग. कंज्यूमर सस्पिशन, एनिमोसिटी, स्केप्टिज्म, डाउट. चारों ऑप्शन देखने में बिल्कुल सही लग रहे हैं. अब क्या करें? देखो मीनिंग समझते हैं पहले तो. सस्पिशन होता है व्हेन देयर इज डिसट्रस्ट. सो इफ आई एम सस्पिशियस ऑफ समथिंग और समवन, मुझे विश्वास नहीं है, मुझे शक है उसके ऊपर. क्या हमें एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर शक होता है? आई गेस नॉट. एक वर्ड है स्केप्टिज्म. स्केप्टिज्म होता है जब हमें विश्वास नहीं होता, हम कन्विंस नहीं होते जल्दी से. सो इफ आई एम स्केप्टिकल, आई एम नॉट इजिली कन्विंस्ड. और दिखाओ और समझाओ और बताओ एंड कन्विंस मी, आई विल बी कन्विंस, बट राइट नाउ आई एम नॉट, आई एम स्केप्टिकल. सो क्या हमें एडवर्टीजमेंट के लिए स्केप्टिज्म होता है या सस्पिशन या डाउट होता है? वेल, आई बिलीव हमें स्केप्टिज्म होता है. कन्विंस नहीं होते हम, अच्छा बस इतना, ये तो मेरे काम का नहीं है या काम का नहीं हो सकता है. So I think option A can be ruled out. Now, animosity means dislike, anger for something. You really don't like something, so there is a feeling of animosity towards it. So animosity to rule out ho jayega because it's out of context completely. So we are left with option D, skepticism. चेक करते हैं engaging word वहां fit होगा कि नहीं होगा. Let's see. So rising ad clutter on television and growing consumer skepticism towards advertising are forcing some big advertisers to think out of the box for delivering their brand messages in a more engaging and compelling manner. Parallel, though present participles. Engaging, compelling format. Makes perfect sense. So that is how we choose the answer, and this is how we eliminate the wrong answer choices. And IPMAT का लेवल समझना है. ये IPMAT का लेवल है. वर्ड्स इतने क्लोज होते हैं, ऐसा लगेगा सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, और अगर हमें वर्ड का कॉनिटेशन या उसका प्रॉपर मीनिंग नहीं मालूम होगा, या वो कैसे किसी वर्ड के साथ कॉलोकेट करता है ये नहीं मालूम होगा, तो हम आंसर्स को ढूंढने में या तो टाइम ज्यादा लगाएंगे या गलती कर देंगे. सो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जिसकी मैंने सेशन के स्टार्टिंग में बात करी थी वो यही है कि कोई वर्ड पॉजिटिव है, वो नेगेटिव कॉनिटेशन है, या वो कैसे कॉलोकेट करता है किसी वर्ड के साथ, किस ब्लैंक में हमें नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए कि एडजेक्टिव चाहिए. ये छोटी छोटी चीजें हमें हेल्प करती हैं आंसर्स डिटरमिन करने में. लेट्स टेक अ लुक एट द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट क्वेश्चन. The dizzying contrast between Africa's dash poverty and the opulence, the wealth of the Europe's top football leagues has proved dash grounds for recruiters, many of them simply small businessmen with few football contacts and or credentials. Ab dekho, abject was without hope, fertile, something that's productive. Acute hota hai serious. क्या पॉवर्टी सीरियस हो सकती है या पॉवर्टी टेरेबल हो सकती है? एब्जेक्ट, आई एम सॉरी, एब्जेक्ट मीन्स टेरेबल. तो पॉवर्टी क्या टेरेबल होगी या पॉवर्टी सीरियस होगी? थिंक अबाउट इट. नाउ ऑब्जेक्ट एज एन ऑब्जेक्ट सिंपली मीन्स कोई भी चीज, right? So not a good fit in the first blank. The entire option should be ruled out. Servile होता है when we really want to please others. That attitude where we want to please others. So we are the yes boss kind, the bootlickers kind. जो हुकुम मेरे मालिक वाला, वो वाला attitude servile attitude होता है. It's an adjective. तो servile poverty तो नहीं होती.
right? People can be servile, poverty can't be servile. So option B or D to rule out हो गए. Now what we are left with? Abject and acute. Fertile और fruitful दोनों productive हैं. तो वो दोनों fertile ground, fruitful ground, technically not wrong, grammatically not wrong. Now we have to choose between abject and acute. Abject, terrible. Acute, serious. So poverty terrible होगी कि poverty serious होगी? Well, I believe poverty terrible होगी. So the dizzying contrast between Africa's abject poverty, terrible poverty, and the opulence, the wealth of the Europe's football leagues has proved fertile ground, productive ground for recruiters. So that's how we find the answers. Well, students, with this I come to the end of the session. I just hope you were able to gain something. ये सिर्फ एक रास्ता है, ये सिर्फ एक आपको एक ग्लिम्स मिला है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं. We will be back again in next week, and there will be more questions based on vocabulary and more words that we will discuss through the same methods. So stay connected and practice karte raho. And let's see, we should do well in the exam. All right. Take care. Bye.